Yes. Okay. Today we are starting off with a new topic, variations. And within this topic, we will be studying ratios, the ratio methodology, which is also known as a unitary method. But we won't be doing specifically a unitary method. We'll be doing a ratio method. We'll be talking about it, that what is it in detail. And then there is another method called K method. First of all, we need to understand that what is this topic about. So let's just talk about that for a minute. Around us, there are many different quantities which are connected with each other in many different manners. So, for example, specifically for those students who are in the final class, they must have studied scattered diagram in their statistics topics. For those who are not in the final class, when you will study statistics, there is a thing called scattered diagram. Okay, now it kind of many students sometimes they mix up these two concepts. They are completely two different concepts. First of all, let's talk about the quantities which are directly connected with each other. Now, those quantities which are very much directly connected to each other, we can easily develop their equation. Okay. Now, for example, जिसकी मैं आपको एक simple से example देता हूँ. There is a library A. There is a library A. They have a policy that if you delay a book after a deadline by 1 day, you will be charged, let's suppose, 5 rupees per day. Fine of 5 rupees per day. Okay. You have delayed the book for 10 days. You have delayed the book for 10 days. कितना fine होगा? 50. कितना fine होगा? Very good. Now, what is this going on? Now, the two quantities I'm talking about is fine and then the number of days. Now, your brain was able to process this information by your brain used something out of the information I gave you. It used a complete set of information for a fine and for the number of days, and that was 5 rupees fine for 1 day. Now, for example, if I tell you same story for the library B, there is a library B, they also do the same thing. They charge, but they don't charge 5 rupees, they have a different amount. So they have the same policy, but they do not charge 5 rupees. So they have the same policy per day they charge you if you delay a book by after the deadline. So for example, you have delayed the book for 10 days for the same for the library B. Give me the exact amount, how much fine you will be charged with. See, your brains are gone blank. Why? Because I don't know how much they are charging for 1 day. How much they are charging for 1 day. So this is a very key information where you have a complete set of information for both the quantities. ठीक हो गया? Now, some quantities are connected in such a way, we call them in variation, we call them as like they are directly proportional to each other. They are directly proportional to each other, like they have a direct relation. Okay. And there are some quantities which are inversely proportional to each other, means they are an inverse relation. Now, what do we mean by a directly proportional? In a direct relation, or though for those quantities which are directly proportional to each other, if a quantity A is increasing, due to the increase in quantity A, quantity B will also increase. So both of them will show exactly same behavior. Okay. And if quantity A is decreasing, now due to decrease in quantity A, quantity B will also
decrease. Now that's basically a direct relation. So you have exactly same behavior. If one is increasing, other will increase as well. Or if one is decreasing, other one will decrease as well. In inversely relation, you have the opposite behavior. If one of the quantity is increasing, now due to the increase in the first quantity, the other quantity will decrease. Or if the first quantity is decreasing, due to the decrease in the first quantity, the second quantity will increase. This is known as the inverse relation. Now, this example which I gave you about the library, number of days and the fine they are charging, how are they connected? In which relation will you put them? Directly proportional. More the number of days, larger the fine is going to be. Now, think of any example from your life or from any subject you study other than mathematics, in which you can connect the two quantities as that inversely. We even did a question of this yesterday, not exactly this topic, but we got mixed up with the words due to the reason that they were inversely connected. अब इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं था वो, बट बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी. I have Anyone an from? Yes, go ahead. I was thinking about when the weather gets colder, the rate of ice cream decreases. All right. The rate of ice cream decreases. You have quoted a very good example. That's where I was going to go, but I will not take that as an inverse relation. I will tell you that in a minute. You are telling me the relation of temperature and the price of ice cream. Okay. Anyone else? Okay. Mehrma, Yes. example, please. In physics, we've studied F is equals to ma, and force is inversely proportional to m. F is equals to ma, and you're saying that force is Mass inversely. proportional to a. Sorry, come again. Mass is. Inversely proportional to a. Okay, you're saying mass is inversely proportional to A. All right. That's a perfect example from physics. That's a perfect example from physics. Now, mass is inversely proportional to acceleration. समझ में आया? अब जितना ज्यादा mass होगा उतनी कम acceleration आप उसमें प्रोड्यूस कर सकेंगे जब आप फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स के साथ. फॉर एग्जांपल, there is a thing which is generating a constant force, let's say 200 newtons. Now there is a huge rock with a lot of mass, and then there is a very tiny thing with a very less mass. Which is going to get more push? The less mass. So mass and acceleration, they are inversely proportional to each other. The example which we did yesterday, isn't I had a dialogue with you on this, that you are traveling with, I guess, 50 kilometers per hour. That's what I said, and I am traveling with 25 kilometers per hour. So the one who is traveling with less speed, lesser the speed, longer the duration. Lesser the speed of travel, longer the time duration taken to reach to a point. So all these quantities are inversely. So this was an example of the quantities which are connected to each other in an inversely manner. Now let's talk about this example which was given by Aisha.
This is an example of a scatter diagram. Now there are some quantities जिनसे हम इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि they are somehow connected, but they are not connected in this manner. Now they do not have a constant there. Constant relation नहीं है उनमें. Constant relation से क्या मना है? Over here, no matter what, for each day, fine will always stay as the 5 rupees. तो 2 days के हिसाब से कितना 5 rupees अनदर ऐड कर लें 10 हो गया 3 days के हिसाब से अनदर 5 rupees ऐड कर लें 50 so that's a constant relation. That's a constant relation. इनवर्सली में भी डायरेक्टली में भी एक कांस्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं होता. इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं है. चलिए हम इसको प्राइस ऑफ आइसक्रीम से करके फॉर एग्जांपल देयर इज एन आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम का डेटा कलेक्ट करता है अपना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइसक्रीम ज्यादा बिकेगी. कॉमन सेंस. बट is there a constant that for every like for every 1 degree Celsius increase इतनी number of ice creams आप बेचेंगे? No, there is no constant relation. So इस तरह के टॉपिक्स को आप scatter diagram there are quantities which are connected but not without a constant. उसकी एक और एग्जांपल इन बायोलॉजी. आप में से जो लोग बायोलॉजी पढ़ते जो नहीं भी पढ़ते उनको उनके लिए उनको भी समझ में आ जाएगा. बट जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए एक टर्म है उन्होंने पढ़ी होगी बायोलॉजी में BMI, बॉडी टू मास इंडेक्स. बॉडी टू मास इंडेक्स क्या है? एक रफ ब्रैकेट है कि इतनी हाइट का जो आदमी है उसका इतना मास होगा. इतनी हाइट का जो आदमी है फॉर एग्जांपल वो उसमें लिखा हो. फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से लिख देता हूँ कि 5 feet एंड या 5'6" का जो है आदमी होगा लेट सपोज उसका वेट ऑन एवरेज होगा 66 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम फॉर एग्जांपल. दिस इज नोन एज body to mass index. Now is it necessary that every person who is 5'6" is going to have a mass of this? Some might be skinny, some might be obese. Yeah, चले ना skinny ना obese थोड़ा सा बाहर आ जाए. Is this a constant relation? No. तो इस तरह के relations को इनके साथ mix नहीं करना. This is a relation, but this is without a constant relation. For those, we will be studying a scattered diagram for these type of relation which are without a constant. वो scattered diagram में पढ़ेंगे जब आप statistics पे आएंगे. इधर हमने सिर्फ वो relations पढ़ने हैं where we have something as a constant. Okay, Aisha? Aisha, clear हुआ आइसक्रीम वाला एग्जांपल? Yes, I got it. Good. All right. अच्छा अब बेटा इसके अंदर आते हैं रेशियो मेथड पे. सबसे पहले हम करते हैं ratio method. Now this is very important. This is very important because you will be using this skill or technique in lots of different places of your IGCSE mathematics syllabus. आप इसको mapping and scaling में use करेंगे, आप इसको enlargement में use करेंगे, आप इसको household finance में use करेंगे. बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जहां पे इसका यूज आएगा. आप इसको वेक्टर्स में भी यूज करेंगे. काफी सारे टॉपिक्स में ये स्किल आपने यूज करनी है. अब स्किल है क्या? कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. whatever the two quantities are which are being discussed, simply write it down. So for example, one is the quantity A and one is the quantity B. ठीक हो गया? In the first line, write down a pair, corresponding pair, जिसमें से एक unknown होगा और एक known होगा. For example, the examiner is asking me a question. X कितना है when B is 10? Find out. Okay. Sorry. What is A when B is 10? In the second line, you always put
a known pair. You always put a known pair. तो मैंने जिसमें मैं आपको नहीं बताया था एक दिन का फाइन ₹5 था. That was a known pair of information, like complete set of information. So in the second line, that's what we're going to put. So for example, 15 पे 25. I'm just randomly मैंने ले किया. अब जैसे ही आपने ये किया तो ये आपने पेपर पे नहीं करना है, ऐसे ये सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने के लिए. आपकी इक्वेशन बन गई. इसको आप फ्रैक्शन कंसिडर करें, बीच में इक्वल टू का साइन इमेजिन करें. ये आपकी फ्रैक्शन आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई. ये आपकी इक्वेशन बन गई. ठीक है. दिस इज फॉर इफ द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक हो गया. इफ द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये जो मैंने रेड से यहाँ पे लिखा है ये आपने नहीं करना. दिस इज सेम एज क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इज सेम एज. अब क्रॉस मल्टीप्लाई का भी आपको पता होना चाहिए. वेन एवर इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये जो रेशियो आप डेवलप कर रहे हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी. अगर और ये क्यों बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेपर में आप भूल जाते हैं, आप 15:25 टॉप पे लिखाते हैं तो नीचे x/10. तो यहाँ से इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा and that will give you 25x is equals to 10 into 15 and x will be equals to 10 into 15 over 25, which is eventually going to give you exactly same thing as this one. So if I am doing these types of question, I will always keep the unknown thing in the numerator so that I have the equation right away. Okay. But ये याद रखना है कि directly proportional में what do? We cross multiply. I'm explaining the procedure without giving you any practical examples. We will be doing that in a minute. ठीक है. अच्छा, for example, if we have something of inverse relation, तो फिर क्या करेंगे? Inversely proportional. Like if one of the quantity is increasing, the other will decrease. This is cross multiply तब करना है जब आपके पास क्या होगा? Directly. Inversely proportional में कैसे करेंगे ये देखेंगे. For example, you have the quantity A, you have the quantity B. बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये लिख लेता हूँ. अब दो तरीके इधर भी मैंने आपको दो बताए. पहला तरीका इक्वेशन का साइन बीच में. अब मैं यहाँ पे ऊपर नहीं ड्रॉ कर रहा, यहाँ पे नीचे बल्कि करता हूँ ताकि ऊपर आप मिक्स ना कर दें. x/15 ये फ्रैक्शन बन गई. ये इसको फ्लिप करके लिखना होगा. इसको इसको यहाँ से फ्लिप करके लिखेंगे 15 उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करें वही चीज आ जाएगी आपके पास. यू कैन विद प्रैक्टिस यू कैन गेट देयर डायरेक्टली. अच्छा, अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन जैसे ये मैंने रेड लाइंस लगाई है इस तरीके से याद करना है. सो व्हेनेवर इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शनल तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई के बजाय आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेट. ठीक हो गया. तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी. तो यहाँ से जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगी? 10x is equal to 25 into 15. तो 10 उधर जाके डिवाइड होगा तो यही चीज आ जाएगा 25 into 15 over 10. चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं. कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है. इसके एग्जांपल में आपको बताता हूँ. अब हम प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हैं, डेली लाइफ. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि करेंसी कन्वर्जन का क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जांपल $30 इज सेम एज. आपने करेंसी कन्वर्ट करवाई है $30 तो आपने कन्वर्ट करवाया. ठीक हो गया. या फॉर एग्जांपल वन ऑफ योर फ्रेंड्स वेंट टू द मनी एक्सचेंज and they converted $30 and they get, let's suppose, 16,000 rupees. आपके दिमाग में ख्याल आता है मेरे पास 20,000 मेरे पास 20,000 रुपीज हैं. मेरे पास 20,000 रुपीज हैं. मुझे कितने डॉलर्स मिले? तो understand the question from here. You have a complete set of information.
like dollars against rupees, you have one complete set of information, that's a complete pair. And from another pair, you have one thing unknown and one thing known. आपको dollars find out करने, whereas you have the rupees. ओके, आपके पास रुपीस हैं, आपने डॉलर्स को फाइंड आउट करना है कि कितने डॉलर्स बनेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो डॉलर्स rupees. Now, first thing first, is this a direct relation or inverse? ओके, एक जवाब आया डायरेक्ट और एक आया इनवर्स, और बाकी ऑनलाइन वाले हमेशा की तरह खामोश. चले आइंदा ऑनलाइन से पूछना ही नहीं. हाँ जी, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स कैसे? ना ना ना, उसको छोड़ें, आप भी सेम टाइम नहीं है, उसको छोड़ दें, आप थोड़ा ज्यादा सीरियस ले गए. अच्छा, हैविंग सेड दैट कि डॉलर की प्राइस फिक्स हो गई, चेंज नहीं होती. अब आपने लिखता है जितने ज्यादा रुपीस होंगे उतने ज्यादा डॉलर्स बनेंगे, या जितने ज्यादा रुपीस होंगे उतने कम डॉलर मिलेंगे? क्यों? 16,000 के $30 है, ज्यादा मिलेंगे ना फिर. तो 20,000 के 30 से ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, तो करेंसी की जो प्रॉब्लम है, ये दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन. तो इसमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो first of all, I need to know how many dollars I am going to get for 20,000 rupees. Now, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो लिख लें. $30 के कितने रुपीस बनते हैं? 16,000. ठीक हो गया. लेंज, दिस इज योर इक्वेशन. x इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन कंसिडर करें, फ्रैक्शन कंसिडर करें, बीच में इक्वल टू का साइन, तो दे 30 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? अगर नहीं समझ में आता है इस तरीके से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे आपको आसान लगता है. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x से स्टार्ट करें, क्या इक्वेशन बनी? 16,000 x इज इक्वल्स टू 20,000 into 30. So x will be equals to 20,000 into 30 over 16,000. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. If you recall from your early years, I think grade 5, 6, 7, उसमें आप मेथड करते थे यूनिटरी मेथड, कि $1 की पहले प्राइस निकालेंगे आप, फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे. $1 की प्राइस कैसे आएगी? डिवाइड कर देंगे. ये क्या चल रहा है यहाँ पे? दिस इज काइंड ऑफ यूनिटरी मेथड, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20,000. ठीक हो गया. तो ये वही चीज है. यूनिटरी मेथड का ही एक आप कह लें एडवांस. 37.5. करेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 डेसिमल प्लेसेस में देना. करेंसी 0.5 कभी भी नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 50, ताकि ये 50 सेंट्स पूरा बोल सके इसको. ठीक हो गया. अच्छा, $37.50. अच्छा, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ.
6 men can complete a specific task in 25 days. तो काम है, जो भी काम है, कमरा बनाना है, कमरा प्लस्तर करना है, या कोई प्रोग्राम लिखना है, सॉफ्टवेयर लिखना है, ठीक हो गया, या कोई घर डिजाइन करना है, मैप बनाना है, जो भी काम है, whatever. There are 6 people. If there are 6 people on it, having said that, or everyone works with the same rate, मतलब everyone is doing exactly same amount of work. So if the 6 men are put to that task, they will take 25 days to finish that job. So order from the company is to finish off the given task in 10 days. So how many men are required to do the task in 10 days? Aisha, direct relation or inverse relation? You need more men to finish the task in 10 days or less than 6 men to finish the task in 10 days? You need more men. More men. So larger the number of the manpower, less the time duration to finish off that task. तो ये कौन सा relation हुआ? Inverse. तो आपने क्वेश्चन को पढ़ के पहला काम ही यही करना है कि identify if the relation is inverse or direct. ये कौन सा है बेटा? इनवर्स लिख लिया करें साथ. अब ये इनवर्स रिलेशन आ गया. अब इनवर्स रिलेशन में रेशो उसी तरीके से. ओके, व्हाट आर द टू क्वांटिटीज बीइंग डिस्कस्ड हियर? Number of men and then number of days. These are the two quantities which are being discussed. ठीक है, चलिए शाबाश करें ये क्वेश्चन. Done. What is the answer? 50. From online students, Abdul Rahman Hassam, would you like to share the answer if you're done? Sir, 15 men. How many? How many men? 15 men. 15 men. 15. Very good. Okay, so if I have to do this question, number of men is the question for how many days? 10 days. How many men are required to finish off the task in 10 days? The given information was 6 men can do the same task in 25 days. ऐसे ही करेंगे? शाबाश. इनवर्स रिलेशन है तो कैसे करेंगे? आमने सामने मल्टीप्लाई. यहां से इक्वेशन क्या बना आपके पास? 10x equals to 25 into 6. X equals to 150 over 10, which is 15 men. कितने आदमी चाहिए? 15. Let's suppose यहाँ पे एग्जामिनर कहता है 11 डेज में करना है. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? फिर 11 आएगा और आपकी कैलकुलेशन में यहाँ पे 11 आएगा. 150 ओवर 11. अब बताएं आंसर क्या आता है? 150 ओवर 11, 13.6.
यही, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। अब आपको 13 आदमी पूरे चाहिए, 13 आदमी पूरे चाहिए, 14th आदमी है वो आधा चाहिए। इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? even if this is, for example, if even if this turns out to be 13.2, राउंड अप करने का अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक नया देखें। अब जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, राउंड ऑफ करने का वैसे विदाउट वर्ड प्रॉब्लम्स नियरेस्ट को हम राउंड ऑफ करते हैं, या अप्रोक्सीमेटली जब लिखना होता है, अप्रोक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट है या एस्टिमेशन का। 13.8 है तो आप उसको 14 लिखेंगे, 13.9 है तो यू विल राइट इट डाउन 14, इवन 13.5 को भी राउंड अप करके 14 लिखते हैं। 13.4 को कैसे लिख देते हैं, फिर 13 लिख देते हैं, उसको राउंड डाउन कर देते हैं जब आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। इसको अब अप्रोक्सीमेशन में 13 नहीं लिखेंगे। क्यों? यू नीड टू फिनिश द जॉब इन 11 डेज। अगर 11 डेज के अंदर, मतलब आपने 11 डेज के अंदर काम पूरा करना है, मींस 13 आदमी प्लस 0.2 आदमी होगा, तब जाके 11 डेज के अंदर काम होगा। अगर वो 0.2 आदमी माइनस कर दे तो 11 दिन से ऊपर चला गया। अब 0.2 आदमी तो मिलने से रहा कि ये छोटा टिकी पैक है, बोनस में ले लें साथ, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप? 14। इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 14 men। 14 men आर रिक्वायर्ड। ये आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एंड दिस इज योर रीजनेबल आंसरिंग। ठीक है, ये तो नहीं पढ़ा रहे यहाँ से। बचत होगी। अच्छा, यहां तक क्लियर है बेटा? अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, गाइड भी नहीं करूंगा, खुद करना होगा। मैं नहीं बताऊंगा कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। ठीक है? ओके, चलो आपने खुद एसेस करना है, खुद देखना है कि ये कौन सा रिलेशन है, और फिर जो है हम उसको 6 typists working 5 hours a day can type the manuscript of a book in 16 days. How many days will 4
typists take to do the same job. Yeah.
हाँ जी, कर लिया है या अभी कर रहे हैं? Almost there. Almost Okay, there. sir. Good. Okay, thank you. Then Haram, Done, sir. done. Wow, good. Yes. Acha, for those who want a challenge, only for those who want a challenge. चले पहले कर ले फिर बताता हूँ अभी बाकी कर रहे हैं। फिर बाकियों ने भी नहीं बताया कि कर लिया। आयशा बेटी आपसे हो गया? Yes, sir, I'm on the second one. और सेकंड वन चलो ठीक हो गया। Okay, by the way, the second one is iPhone 15 costs $1,100, just in case if it's not very clear. This is $1,100. And that's 1,300 pounds. Done? हो गया आपसे? अच्छा जी, what is the answer for the first one? 24 days. ये किसका है? Inversely proportional का? 6 typists, 16 days. So you've reduced 2 typists and they're going to take four typists are going to take 24 days. यही आंसर आ रहा है बाकियों का भी? नहीं? Yes, sir. यही आ रहा है? ओके, चलें इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट भी करता हूँ जस्ट इन केस अगर किसी से नहीं हुआ. So on one side we are talking about number of typists and on the other side number of days. ऐसे? So 6 typists, they are taking 16 days. ऐसे? So that's a complete set of information. इसको हम नीचे लिख लेते हैं. In the first line I'm going to put how 6 typists, नहीं 4 typists था ऐसे? 4 typists कितने दिन लेंगे? So inverse relation, direct relation. Inverse relation. Straight multiply करेंगे. तो ये आपके पास आएगा 4x because less the number of typists. Number of typists आपने कम कर दिए तो ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, नंबर ऑफ टाइपिस्ट बढ़ा देंगे वो उतने जल्दी खत्म हो जाए. So 4x is equals to 16 times 6. X is equals to 16 times 6 over 4. And the answer is 24 days. For those who need
a little bit of challenge and those who enjoy doing maths, and इसमें एक चीज ऐड कर लें, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, only for those who enjoy doing maths and then love exploring mathematical things, इसमें एक चीज ऐड कर. How many days will 4 typists take to do the same job by working 6 hours a day? पहले जब 6 लोग थे तो they all were working 5 hours on a daily basis. ठीक है, अब I have reduced 2 people and I have reduced the number of hours they are working for everyone. Okay, तो फिर ये किस तरीके से, so this is a new addition, इसको थोड़ा सा देखिएगा कैसे करना चाहेंगे आप लोग. अच्छा, नेक्स्ट I-115 cost 1100. अच्छा, इस क्वेश्चन ये डायरेक्ट है इनवर्स है, नहीं समझ में आ रहा? You did it some other way. Yes, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, इनवर्स बनेगा. करेंसी कन्वर्जन या एक्सचेंज रेट का जब भी क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा. एक्सचेंज रेट देखें, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने, अगर आप ये इनवर्स रिलेशन हो ना करेंसी कन्वर्जन का, यानी एक पैसे बढ़ा रहे हैं दूसरे कम हो रहे हैं, तो ये एक इतने बढ़ा दें कि ये जीरो हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, कम होते 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 जीरो पे आ जाएंगे. हमेशा ऐसे ही होगा, जितना ये बढ़ाएंगे उस हिसाब से एक कांस्टेंट के साथ ये भी इंक्रीज करेगा. अच्छा, ना हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन ना. अब हमने क्वेश्चन क्या है, व्हिच कंट्री इज सेलिंग इन लेसर प्राइस. अब आपकी मर्जी है, दैट इज टोटली योर चॉइस, आपने सिर्फ ये देखना है किधर सस्ता पड़ता है. अब आपकी मर्जी है. अब जो यूएस में लोग बैठे हुए वो क्या करेंगे, पाउंड को यूएस में करेंगे, और जो ब्रिटेन में बैठे हुए वो क्या करेंगे, वो डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे. आप ना ब्रिटेन में या ना यूएस में, अब आप परेशान हो गए कि किस में गए, आपकी मर्जी है. आप पाउंड्स में कन्वर्ट, पाउंड्स में देखना चाहते हैं या डॉलर्स में देखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, किस में देखें जी, आप बताएं. पाउंड्स में देखते हैं. सो हम क्या करते हैं, जो डॉलर यूएस में देखते हैं, अगर यही चीज मैं यूएस में देखता हूँ कि जो डॉलर वाली चीज अगर मैं पाउंड्स में लूँ एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके, तो ये कितने पाउंड्स एक्चुअली में बनते हैं. सो लेट्स डू दैट. सो डॉलर्स, pounds, all right, I'm doing pounds, right? I'm converting dollars into pounds. I need to know how many pounds am I gonna get for $1100. Exchange rate क्या दिया हुआ है, a pound is to $1.34. Cross multiply 1100 divided by 1.34 कितना आता है बेटे? 820.89. ये किस में आया? नहीं नहीं, हमने क्या कन्वर्ट किया, पाउंड्स कन्वर्ट किए, तो कितने पाउंड आ गए, 800. यही आता है 1100 डिवाइडेड बाय 1.34. ठीक है, 8 9 के बाद 5 है, नहीं नहीं नहीं, फिर इसको 8 9 नहीं लिखेंगे, अगर 8 9 के बाद 5 है तो इसको आप 90 लिखेंगे. ठीक हो गया, 820 pounds and 90 cents. ठीक हो गया, तो दिस इज हाउ मच यू आर गेटिंग. तो कहाँ पे सस्ता हुआ, यूएस में सस्ता हुआ ना. ठीक है ना, यूएस में आपने अपना एक स्केल रखना है, या आप पाउंड्स में देखेंगे या आप डॉलर्स में देखेंगे. आपने जो यूएस में जो कॉस्ट है उसको एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया पाउंड्स में. अब आप देखें, अगर आप यूएस में मोबाइल लेने जाते हैं आप 820 पाउंड का मिलेगा. अगर आप इंग्लैंड से मोबाइल लेने जाते हैं तो वही मोबाइल आपको कितने का मिलेगा, 1300 पाउंड का. तो कहाँ सस्ता हुआ, कहाँ पे सस्ता हुआ, यूएस पे सस्ता हुआ. अब एग्जामिनर अगर इसमें एक चीज डाल देता है, which country is selling in lesser price
एंड बाय हाउ मच, ये सारे करेंगे, ये सिर्फ शौक वाले लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए। एंड बाय हाउ मच गिव योर आंसर इन डॉलर्स। अगर साथ में ये भी लिखा होता है एग्जामिनर ने, तो फिर क्या करते? फिर आपके पास चॉइस नहीं थी, आपने किस में बात करनी? डॉलर्स में। तो आप ये जो पाउंड है इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे विच वन इज चीपर एंड बाय हाउ मच, फिर आपने डिफरेंस भी निकालना था प्राइस का, वो आपका फाइनल आंसर होता कि फ्लां कंट्री इज चीपर, वो डेफिनेटली कौन सा बन रहा है? यूएस। और फिर वो जो भी आपके पास प्राइस आनी थी वो आपने बतानी थी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम के मेथड को, एक और मेथड है, ये रेशो मेथड था, नेक्स्ट क्लास में हम के मेथड देखेंगे उसको। वो आसान है इंशाल्लाह, उसके भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। इस टास्क को देखते हैं कौन करता है, बाय वर्किंग 6 hours a day, ये जो मैंने किया देखते हैं। ठीक हो गया? ये आपकी मर्जी, जो करना चाहेगा वो कर। Alright, take good care of yourself. Inshallah, see you all on Monday. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Aisha. Allah Hafiz is in. Sir, could you share the answer? For which one? The challenge you gave us. Challenge I gave you. All right, just give me 1 second. Allah Hafiz. Looks like you've already done it. 20 days. 20. Yeah, I got it right. You got it right. Yeah, I got 19.2, but you'll round it up 20. Good. Share the working, please. Okay. All right, everyone. Take care. Bye, Allah sir. Hafiz.